मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं, तो वहीं जब भी वो किसी महिला से मुलाकात करते हैं तो उन्हें जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब वो संसद की कार्यवाही के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले किसी बैक बेंचर की तरह एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले से बात करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी इतनी फजीहत हुई कि एक नहीं बल्कि दो ट्वीट कर उन्हें सफाई देनी पड़ गई। और अपनी सफाई में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सीता भी यहाँ बदनाम हुई है। दरअसल मंगलवार को लोकसभा में यूक्रेन के हालात पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए और कुछ ही देर बोला होगा कि भाषण के बीच में ही एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस सांसद शशि थरूर दोनों बात करते हुए नजर आए। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया, जिससे परेशान होकर शशि थरूर को अपनी सफाई देनी पड़ गई। गुरुवार को उन्होंने एक ट्वीट में सुप्रिया सुले को टैग करते हुए लिखा, जो लोग लोकसभा में मेरे और सुप्रिया सुले के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत पर मजे ले रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि वो मुझसे एक नीतिगत सवाल पूछ रही थी, क्योंकि वो अगली वक्ता थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी ताकि फारूक साहब को परेशानी ना हो, इसीलिए मैं सुप्रिया को सुनने के लिए थोड़ा सा झुक गया था। इस ट्वीट में शशि थरूर ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन सुप्रिया सुले नाम के गलत ट्विटर हैंडल को टैग कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर शशि थरूर की फजीहत होने लगी। ट्विटर यूजर मिथुन ने लिखा कि अब ये निकोलस ब्राउन कौन है। एक यूजर ने लिखा कि फेक हैंडल भी अपने हिसाब का ही चुना है। पल्लवी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, योर जस्टिफिकेशन इज एज रियल एज द हैंडल यू हैव टैग, वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। दरअसल शशि थरूर ने अपनी सफाई देते हुए टैग तो सुप्रिया सुले को किया था, लेकिन वो फेक ट्विटर हैंडल निकला किसी निकोलस ब्राउन का, जिसकी वजह से शशि थरूर खूब ट्रोल हुए। जिसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और सुप्रिया सुले को टैग करते हुए लिखा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम क्या है, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। शशि थरूर ने इस गाने के साथ जहां मजाक उड़ाने वाले लोगों को जवाब दिया, तो वहीं सुप्रिया सुले का ट्विटर हैंडल भी सही इस्तेमाल किया और संसद में बात करने वाली अपनी वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए शशि थरूर ने बताया कि वो सुप्रिया सुले से किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कोई सांसद बोल रहा हो और कैमरा वक्ता की ओर हो, उस वक्त क्या इस तरह से बात करना सही था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जिस वीडियो की वजह से शशि थरूर ट्रोल हुए हैं, आइए वो पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। थैंक यू थरूर जी। नेक्स्ट डॉक्टर्स फरूक अब्दुल्ला जी। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। After a great diplomat who has served the United Nations for years, it's a very difficult thing for me to speak. He spoke very well, and his English is beyond me anyway. First of all, I'd like to start with, it's a failure of the United Nations. United Nations continues to fail this world. It failed, as Tharoor said, in Vietnam. It is still failing in Korea. It has failed in the Middle East. And I don't think, I personally, over these years, have any hope from that organization. First of all, I would like to thank not only the Prime Minister of India, but all those ministers who he chose to go to that war-torn country to bring our children back. And I must say, at the cost of their own safety, they took this journey and brought those children back. I congratulate you and I congratulate the Prime Minister for this bold step. But also at the same time,
It's very easy to say that we should play a mediation role in a condition today where two major powers, America and Russia, are at loggerheads. So why did it happen? Russia continued to tell Ukraine, please don't have enemy round my border. I hope my members will remember when, at the time of Khrushchev, they put missiles in Cuba. Kennedy was the president of America. They had to remove because America felt the threat of those missiles. Today, Russia feels the same way. I think they told this country, very frankly, please be neutral. We have no difficulties with you. They also gave them some aid before that, many millions of dollars. Stay free. But they still chose to join NATO. No doubt, it was there. It is a free country. They could choose. But Russia felt threatened. This we should not ignore. And I think, under those circumstances, when you say that any country, how about us? When you think of China and you think of Pakistan, now you're telling that Russia will also join it. Are we not afraid? Are we not worried that our forces will be tremendously at pressure to defend our integrity? That is what that country felt. Now, the way forward. Question is, all of this happened. Millions have moved out of their home. Many have died. And God knows how many are yet going to be taken out of the soil. How do we move forward? Let's forget. It's over. The war is there. It is still there. But how do we now comprehend of saving whatever is left so that the war comes to an end and the world comes to a position of surviving? Today, the world is not surviving. You see our neighbor, Sri Lanka. Look at the position there. I hope we don't have to go through that situation in this country. Therefore, it's essential that the war must end. How do we end it? All right. Now, you said diplomatically. Is there a diplomatic chance? I remember Trump said, America first. Why is India not thinking India first? If it is not in India's interest, this war, then I think to the foreign minister and through him to the prime minister, I would request, we must take major steps. Major, not small steps. Major steps in de-escalating that war, finishing that war. Unless we do that, you will not be able to tell future people that India played its part. India is a neutral country. India never took sides. Though Russia gave it, the only country that the Russians gave when our ambassador was D.P. Dhar, and they signed an agreement which they have signed with no one, that war on India will be war on Russia. Never forget that. And therefore, what we must remember, that if we want to save friends, because we have got friends in America, we've got friends with Russia. We're not enemies of any of these countries. And that is one of the biggest things that country has achieved from the Nehru's time. Whatever one may say, it was the Nehru's foreign policy of keeping neutral with friends from all sides so that we could move forward and take this country from poverty to the developed country. Therefore, my request to the foreign minister would be, sir, please move faster so that at least people will say, Gandhi's nation has saved this world. And thank you, sir. God bless you.